नमस्कार। स्वागत है आपका आपके क्लास में। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ड्रामा। ड्रामा बिफोर शेक्सपियर एंड देन ड्रामा ऑफ शेक्सपियर। Drama before Shakespeare, or you could say dramatists who were the shapers of William Shakespeare. As you know that entire literature origins from religion, whether it was poetry, prose or drama. Poetry is the oldest genre of literature. Epics were written first, though earlier they were in oral form. Orature comes first and then literature follows. When we talk about literature and especially drama, drama started in its original form in the medieval period. From 12th to 15th century, from 12th to 15th centuries, dramas were totally religious. They were performed on religious occasions by religious people, written in religious language. And you know that after the defeat of Anglo-Saxon, after Norman conquest in 1066, there were three languages in society in England. French was the language used for official purposes. English people, the natives of England, were speaking their English, though it was very ragged and jagged at that time, and for the religious purpose, Latin was used. So when we talk about the beginning of the drama, especially English drama, इंग्लैंड में क्या था कि इंग्लैंड में भी लैटिन में ही वो प्लेस होते थे, एंड दे वर परफॉर्म्ड बाय द रिलीजियस पीपल, दे वर परफॉर्म्ड बाय द क्लर्जीज, राइट। जो क्लर्जी होते थे वही उनको परफॉर्म करते थे, राइट। द ड्रामा अरोज इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में ही होता है। क्लासिकल ड्रामा की बात वी हैव ऑलरेडी डन विद दैट पार्ट, राइट। ग्रीक ड्रामा एंड लैटिन ड्रामा. नाउ we are in the English period, so today I am talking about only English drama. And the drama arose in England as in other Catholic countries of Europe in the attempts of the clergy to teach the masses. The primary purpose of the drama was to teach, right? The primary purpose of the drama was to teach the masses, right? And what to teach the masses? The message given by Jesus Christ, right? The message prevalent in Christianity. जो मैसेज क्रिश्चियनिटी में थे लोगों को नहीं पता थे. ड्रामा was a medium to communicate the gospels, to communicate the message, to communicate the miracles, to communicate the mysteries undertaken by different religious people, इवन जीसस क्राइस्ट. उन सारी चीजों को लेकर के ड्रामा का डेवलपमेंट शुरू होता है, राइट. द क्लर्जी वांटेड टू टीच द मासेस द टेनेंट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, राइट, द टेनेंट्स ऑफ क्रिश्चियन फेथ बाय ड्रामेटाइजिंग द सर्विसेज ऑफ द चर्च एट क्रिसमस एंड ईस्टर, राइट. हाउ दे taught the masses, they taught the masses by dramatizing the services of the church, right. They tried to teach the masses by dramatizing the services of the church to the common man, right. Common man ने के लिए चर्चेस ने क्या किया था, वही उनका एकमात्र टारगेट था, अपना मैसेज परफॉर्म करना.
And when drama means acting, right? Drama means everything is happening on the stage, right? Stories were not told only, but stories were acted. And when we see anything in acted form, action always happens, it always take place in present, हमेशा वो प्रेजेंट फॉर्म में होता है. तो क्रिसमस और ईस्टर का जब फेस्टिवल होता था तो ही ड्रामा को परफॉर्म करते थे, राइट, ड्रामेटाइज करते थे चर्च के सर्विसेज को, राइट. द प्लेस वर इन लैटिन, राइट. ये बिगिनिंग है इंग्लिश ड्रामा की. द प्लेस वर इन लैटिन, the plays were in Latin, and the performers were clergy and churchmen. Performers were clergy and churchmen. And where did they perform? First inside the church and then churchyard. Right? These are the characteristics of medieval drama. Medieval drama meant to teach the masses by dramatizing the services of the church. The plays were written in Latin, performed by clergy and churchmen, and the place of the performance, there were no theaters at that time. So initially the plays were performed inside the church, and when the people increased, when the audience increased, then they started to perform the plays in the churchyard. और फिर जब उससे भी ज्यादा लोग होते हैं तो चर्च यार्ड से फिर वो बाहर निकलते हैं, और जब चर्च यार्ड से बाहर निकल करके वो टाउन्स में जाते हैं. बट इसमें टाइम लगता है जो है चर्च से बाहर निकलने में, राइट. तो ये बेसिक था. और क्या काम करते, एक्टर्स कौन थे? एक्टर्स जो है वो खुद क्लर्जी हुआ करते थे. सच स्क्रिप्चरल प्लेस इन लैटिन आर नोन टू हैव बीन परफॉर्म्ड as early as 12th century. जो है they were first given in the church, later in the churchyard. पहले चर्च और फिर चर्चयार्ड में. They became very popular after the institution by the Pope of the festival of Corpus Christi. Corpus Christi एक फेस्टिवल होता था. और कॉर्पस क्रिस्टी फेस्टिवल के टाइम से ये ड्रामा जो है और ज्यादा पॉपुलर होने लगा. कैसे पॉपुलर होने लगा? तो फेस्टिवल कॉर्पस क्रिस्टी वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बाय पोप इन आर अराउंड 14th century. और उसके बाद द सेट्स ऑफ प्लेज which were given by separately at Christmas and Easter were now combined in one cycle, performed on the occasion of Corpus Christi, performed on the occasion of Christmas, performed on the occasion of Easter or other festivals. Right? Their language was now become English. Means after 13th century, 12th century में Latin was the language, and in the 14th century now the language of the drama has become English. Right? After the institutionalization of Corpus Christi, the language of the drama changed from Latin to English. Latin से ये English पर आ जाती है जब Corpus Christi का institutionalization पोप कर देता है तब. राइट? और एक चीज और हुई कि जब Corpus Christi में ड्रामा आता है, उसके बाद का जो ड्रामा है, it also incorporated certain elements of comedy. राइट? सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ जो है कॉमिक एलिमेंट्स भी आते हैं, और इन दिस वे इट ट्राइड टू ग्रास्प, इट ट्राइड टू पुल मोर ऑडियंसेस. राइट? मोर ऑडियंस को खींचना शुरू करता है, और धीरे धीरे जो है चीजें बढ़ना शुरू होती हैं. एज द चर्च यार्ड्स कुड नॉट होल्ड द ग्रोइंग क्राउड्स, द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेस वाज टेकन ओवर बाय द टाउन्स. एज द
कॉर्पस क्रिस्टी फेस्टिवल जो है, ये उसकी सबसे खास बात क्या थी कि कॉर्पस क्रिस्टी फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड विद अ पेजेंट और प्रोसेशन, राइट। Corpus Christi festival was celebrated by peasant or with procession. जुलूस उनके साथ चलता था और उस जुलूस को टाइम पर जो है जो प्लेस परफॉर्म होने शुरू हुए उन प्लेस को ही पेजेंट कहा जाने लगा। PAGEANT, पेजेंट जो है वो प्लेस ही हो गए, राइट। एंड दे वर गिवन on moving platforms which themselves to be called pageants, right। अब चर्च यार्ड से जब शिफ्टिंग होती है तो चर्च यार्ड से शिफ्टिंग कहाँ होती है कि नाउ द परफॉर्मेंस जो है इट वाज बीइंग गिवन ऑन द मूविंग प्लेटफॉर्म। मूविंग प्लेटफॉर्म कैसा प्लेटफॉर्म होता था कि द परफॉर्मर्स यूज्ड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे यूज्ड टू गिव परफॉर्मेंसेस ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द सिटी, जिसको आप नुक्कड़ नाटक कहते हो, राइट, कैरिंग हैवी मैसेज। और वो जो नुक्कड़ नाटक का जो एक कॉन्टेक्स्ट प्रारंभ होता है उसी को पेजेंट कहा जाने लगा, राइट। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द पेजेंट्स ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, देन पेजेंट्स वर अ फॉर्म ऑफ ड्रामा, अ ड्रामा दैट कंटेन्ड द एलिमेंट्स फ्रॉम द रिलीजन एंड कॉमिक एंटरटेनमेंट, दोनों का मिक्सचर हुआ। And it was performed by a group of performers, and basically the performers were from a church, right। church and churchmen हुआ करते थे and they used to perform outside the church, और जब outside the church होता है तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को peasants कहा जाता है। they were not unlike the procession, ऐसे आजकल हमारे आपके यहाँ पर क्या होता है कि रामलीला होती है, कृष्ण लीला होती है, तो रामलीला और कृष्ण लीला भी मूविंग थिएटर्स पर ही अब होती है, वो परमानेंट थिएटर्स नहीं रहे। या जैसे रामलीला और कृष्ण लीला होती है अंड पर्टिकुलर ओकेजन, राम विवाह होता है, पर्टिकुलर ओकेजन सीता विवाह होता है, खासकर हमारे अयोध्या में, तो अलग अलग परफॉर्मेंसेस दी जाती हैं, राइट। और वो जो ड्रामा होता है, स्टोरीज आर टेकन फ्रॉम रामचरितमानस, आर टेकन फ्रॉम रामायणा, आर टेकन फ्रॉम महाभारता, and they were performed by the people, by the religious people, by the saints of the much and temple, वही लोग उसको परफॉर्म करते हैं। and they also wear very heavy clothes, और उन्हीं को जो है पेजेंट कहा जाता था during the medieval period in Europe, right। it was the beginning of drama, how drama took shape, so drama took shape in the lap of church, and the stories earlier जो है कंटेंट कहाँ सप्लाई होने लगा, कंटेंट भी बाइबल से, टेस्टामेंट से सप्लाई होने लगा, एंड इट अट्रैक्टेड ऑडियंस अ लॉट, और इसलिए व्हेन ऑडियंस इंक्रीज्ड दे केम आउट फ्रॉम द चर्च एंड चर्च यार्ड टू द कॉर्नर ऑफ द टाउन, एंड दे इवन डेवलप्ड अ मूविंग थिएटर फॉर द परफॉर्मेंसेस, राइट। उन्होंने जो है मूविंग थिएटर भी डेवलप कर लिया परफॉर्मेंस के लिए, और वो फिर प्रोसेशन में परफॉर्म करने लगे, right। the whole of the scriptural story from the birth of Christ to his crucifixion and ascension was enacted in a cycle of plays called miracles or morality plays। the first development जो हुआ, जो procession और जो pageants के थ्रू परफॉर्म होता था, उन प्लेस को मिराकल या मोरालिटी कहा जाने लगा, नॉट मोरालिटी बट मिराकल और मिस्ट्री प्लेस उनको कहा जाने लगा, मिराकल्स एंड मिस्ट्री प्लेस। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिराकल्स एंड मिस्ट्री प्लेस? एक्चुअली देयर इज डिफरेंस in France, right? There is difference in French miracle and morality plays. As far as English plays are concerned, there is no difference at all between miracle and morality, right? French और जो में difference क्या है miracle and mystery के बीच में, बहुत छोटा सा है। The former denoting plays dealing with the life of Christ,
राइट। डिस्टिंक्शन जो है मिस्ट्री एंड मिराकल में ये है कि जो मिस्ट्री होता है, मिस्ट्री प्ले डील्स विद द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, और जो मिराकल होता है इट डील्स विद द लाइव्स ऑफ सेंट्स ऑफ द चर्च, राइट। मिस्ट्री प्लेस डील्स विद द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, mystery plays deals with the life of Christ, and miracles dealt with the life of saints, right? This is the basic difference between miracle and mystery plays, right? The former denoting the plays dealing with the life of Christ, and the later those dealing with the lives of saints. This distinction is true in France but not of England, where all the plays were indiscriminately called miracles, right? इंग्लैंड में सबको ही जो है miracles कहा जाता है, इंग्लैंड में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर? फिर से सुनिए, इन अदर लैंग्वेज द मिस्ट्री प्लेज एंड मोरालिटी प्लेज ऑफ द 15th century and 16th century were very different from modern drama. They were performed in public spaces by ordinary people and organized and funded by guilds of craftsmen and merchants, right? The words theater and drama conjure a specific set of ideas, writers and images for us today, but earlier they were totally different. Mystery plays क्या होते थे? Mystery plays are sequence of performances, sometimes referred to as cycle plays, because they make up a cycle of 48 surviving short playlets जिनको कहा जाता था। तो ये पेजेंट से क्या होते हैं, मिराकल और मिस्ट्री से जो है वो साइकिल प्लेज में कन्वर्ट होते हैं। और साइकिल प्लेज अब फंडिंग इनकी कौन करता था, पहले एक बात ये भी जान लीजिए कि इनका जो फंडिंग कौन करता था, इनके फंडिंग मर्चेंट्स करते थे। इंग्लैंड हैज ऑलवेज बीन अ कंट्री ऑफ मर्चेंट्स एंड बिजनेसमैन, so they used to fund, right? They used to fund to the plays, playwrights को जो है फंड करते थे और वही इनको परफॉर्म करवाते थे। और जब साइकिल का फॉर्म आता है तो देयर वर मेनली 4 साइकिल्स ऑफ प्लेज, और वो जो 4 साइकिल्स ऑफ प्लेज है उसमें कौन कौन से हैं, उसमें है साइकिल्स ऑफ यॉर्क, साइकिल्स ऑफ चेस्टर, साइकिल ऑफ कवेंट्री और साइकिल ऑफ वेकफील्ड। दीज आर द 4 साइकिल्स ऑफ प्लेज। साइकिल्स का मतलब कि दे यूज टू मूव ऑन, राइट? वो मूव ऑन किया करते थे और परफॉर्मेंस दिया करते थे, उन्हीं को साइकिल ऑफ प्लेज कहा जाता है, राइट? तो कॉर्पस क्रिस्टी, इंग्लिश प्लेज, लैटिन प्लेज, पेजेंट्स और फिर साइकिल का नंबर आता है, राइट? 4 साइकिल्स वर साइकिल्स ऑफ यॉर्क, right, based on the name of Yorkshire, cycle of Chester, cycles of Wakefield, and cycles of Coventry. These were the prominent 4 cycles, and cycles of Wakefield को टाउनली प्लेस भी कहा जाता है। टाउनली साइकिल्स भी कहा जाता है, और इनमें अलग अलग नंबर्स में प्लेस हुआ करते थे और उनकी परफॉर्मेंस हुआ करती थी, राइट? अलग अलग नंबर के प्लेस, अलग अलग उनकी परफॉर्मेंसेस गिवन बाय डिफरेंट परफॉर्मर्स। Right? Basically, they were cycles of the mystery plays. Right? They were the cycles of the mystery plays and miracle plays. मिराकल और मिस्ट्री के वो साइकिल हुआ करते थे।
यॉर्क साइकिल में द मोस्ट कंप्लीट वर्जन जो था वो यॉर्क साइकिल का था एंड इट कंटेन्ड 48 पेजेंट्स, राइट। यॉर्क में जो है टोटल 48 पेजेंट्स थे। uh, 48 पेजेंट्स, PAGEAN, PAGEAN, 48 पेजेंट्स साइकिल ऑफ यॉर्क में थे और इसी को सबसे कंप्लीट कहा जाता है। एंड देयर आर आल्सो टाउनली प्लेस ऑफ 32 पेजेंट्स once thought to have been a true cycle of plays acted at Wakefield, और इसमें टोटल 32 प्लेस थे, 32 पेजेंट्स थे, जहां कहां परफॉर्म होते थे, वेकफील्ड में होते थे, राइट। Chester cycle of 24 pageants now generally agreed to be an Elizabethan reconstruction of older medieval traditions. Chester cycle में टोटल 24 पेजेंट्स थे। चेस्टर में 24, यॉर्क में 48, वेकफील्ड में 32, राइट। अलग अलग साइकिल अलग अलग प्लेस को जो है कैरी करते थे। And in the last cycle of Coventry, there were 42 plays. There were 42 peasants. Right? ये साइकिल्स थी किसकी? मिराकल एंड जो है मिस्ट्री प्लेस की, राइट। कवेंट्री साइकिल जो है आर अ साइकिल ऑफ 42 मेडिवल मिस्ट्री प्लेस फ्रॉम बिटवीन 1450 एंड 1500, और इन्हीं को जो है जो कवेंट्री प्लेस है, कवेंट्री साइकिल है, इन्हीं को एन टाउन प्लेस भी कहा जाता था या इन्हीं को हेग साइकिल भी कहा जाता है। कवेंट्री को क्या कहा जाता है? एन टाउन प्लेस, एन टाउन प्लेस, and they are also known as Higg cycle and Ludus Coventry cycle। 42 साइकिल्स इसमें थे, राइट। 42 प्लेस थे, तो ये एक साइकिल थी। देयर आर 4 कंप्लीट और नियरली कंप्लीट एक्सटेंट इंग्लिश biblical collection of plays, although these collections are sometimes referred to as cycles. It is now believed that this term may attribute to these collections more coherence than they in fact possess. The most complete cycle is the York cycle of 48 pageants. There are also the Townley plays of 32 pageants. Wakefield में परफॉर्म होते थे। Coventry plays contains 42 pageants and Chester cycle जो है of 24 pageants, now generally agreed to be an Elizabethan reconstruction, right? Also extant are 2 pageants from a New Testament cycle acted at Coventry and 1 pageant each from Norwich and Newcastle upon Tyne. Additionally, a 15th century play of the life of Mary Magdalene, the Bromie Abraham and Isaac, and a 16th century play of the conversion of St. Paul exist, all hailing from East Anglia, but they are not as much important as these cycles of plays. You have to keep in mind the number of plays that each cycle contains, and such questions can be asked in your examination. How many pageants does how many pageants do cycles of York contain? तो आपका जवाब क्या होगा? साइकिल ऑफ चेस्टर में कितने हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? वेकफील्ड में कितने हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? राइट, ये ड्रामा की बिगिनिंग है, ये बेसिक है ड्रामा की, जहां से इंग्लिश ड्रामा शुरू होता है। एंड इन योर सेक्शन ऑफ यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, देयर इज एन एंटायर सेक्शन ऑन ड्रामा।
राइट। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ग्रीक एंड लैटिन ड्रामा, ये दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज द स्टार जो है कमेंसमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा, जहां से चीजें जो है बिगिन हो रही हैं, जहां से चीजें शुरू हो रही हैं। क्लियर। एंड यहां से फिर डेवलप होता है मिराकल और मिस्ट्री से फिर अलग अलग नाम तो शुरू हो जाते हैं, जैसे कि सेंट प्लेस शुरू हो जाता है। सेंट प्लेस जो है वो मिराकल प्लेस का ही एक टाइप होता है। मिराकल में जो है लाइफ ऑफ सेंट्स की बात होती है, तो सेंट्स प्लेस में भी उन्हीं की बात होती है। एक क्रॉनिकल प्ले आता है जो बाद में डेवलप होता है हिस्ट्री प्लेस में। क्रॉनिकल का मतलब ही होता है हिस्ट्री, राइट। मिस्ट्री, मिराकल, और एक फॉर्म जो डेवलप होता है यहाँ पर दैट इज मोर फेमस, वो है इंटरल्यूड। Interlude, and all of you have heard the term interlude. What does the term convey, right? convey की मीनिंग क्या है ये सब आपको पता है। इंटर का मतलब ही होता है बिल्कुल बीच में, राइट। इंटरल्यूड का मतलब होता है बीच में। और although most interludes were sketches of non-religious nature, some plays were called interludes that are today classed as morality plays. Morality plays क्या होते थे? Morality play, as the name suggests, कि morality plays में abstract characters होते थे, right? abstract characters होते थे containing some moral stories, right? जिनमें moral story जरूर हुआ करती थी, उन्हीं को morality plays कहा जाता था, right? morality plays जो है also called morality allegorical drama होते थे, popular in Europe in जो है during 15th and 16th century, in which the characters personify moral qualities, right? characters personify moral qualities, उन्हीं को allegorical plays कहा जाता था। allegorical allegory से बना है, and an allegory has at least two meanings, right? तो यहाँ पर characters personify moral qualities such as charity or vice, or abstractions as death or youth, and in which moral lessons are taught, right? moral lessons taught किए जाते थे, as the name suggests। allegorical plays होते थे, और characters जो है वो कैसे होते थे? abstract characters। abstract characters कैसे होते थे? जैसे evil, जैसे good, जैसे virtue, जैसे vice, right? तो they are abstract characters, और abstract characters जो है they convey the moral sense of the play, right? इनको जो है moral qualities और abstractions, and in which moral lessons are taught, clear? moral lessons taught होता था। और यहीं से मोरालिटी प्ले से फिर डेवलपमेंट होता है नेक्स्ट स्टेज का, जिसको हम इंटरल्यूड कहते हैं। ऑल्दो मोस्ट इंटरल्यूड्स वर स्केचेस ऑफ नॉन रिलीजियस नेचर, राइट। मतलब यह है कि फ्रॉम रिलीजियस प्लेस नाउ वी आर शिफ्टिंग टू सेकुलर वंस, और जब हम सेकुलर में जाते हैं तो नॉन रिलीजियस बनता है। एंड इंटरल्यूड्स आर जो है दे आर बेसिकली नॉन रिलीजियस प्लेज, right? non-religious in nature। non-religious in nature, right? ये इंटरल्यूड की डेफिनेशन है। some plays were called interludes that are today classed as morality plays। John Haywood, one of the most famous interlude writers, कौन है? जॉन हेवुड brought the genre to perfection in his plays of the weather and plays called for peace। John Haywood is the most successful interlude writer, और उनका जो प्ले है एक का नाम है द प्लेस ऑफ द वेदर
The place of the weather. The place of the weather. Weather की spelling WETH. क्या हो गया भाई? The place of the weather और एक दूसरा play, the plays called the 4PP. The play called the 4PP. This one was written in 1533 and this one was in 1544. Right? The plays of the weather and the play called 4PP. The Earl of Essex is known to have had a company of interlude players in 1468. The first royal company was apparently established in 1493. Right? 1493 में स्टैब्लिश होती है. राइट? तो ये इंटरल्यूड था कि इंटरल्यूड वाज अ टाइप ऑफ मिराकल, वाज अ टाइप ऑफ morality play, and sometimes interlude and morality plays intermingle. The basic difference is that most of the interludes are of non-religious nature. Right? और जो एग्जाम्पल्स हैं वो जॉन हेवुड के ये दो प्लेस हैं, द प्लेस ऑफ द वेदर and the play called 4Ps. क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए. Interludes, as the name suggests, came in between events to provide witty entertainment to the audience. Usually they are very short and used the topics of politics or religious issues, but this was done in a rather funny manner. Therefore, they are considered as secular farces. They were performed by professional actors either between the acts of a long play or during a feast where entertainment was required. Right? They were performed between a long play, between two acts of a long play, or they were performed during the feast, and their basic purpose was to entertainment. Actually, they were farce. एंड देयर बेसिक टारगेट जो था वो पॉलिटिक्स हुआ करती थी, पॉलिटिक्स पर वो सटायर किया करते थे और बीच में आते थे प्लेस के, इसलिए उनको इंटरल्यूड कहा जाता है. Thomas Heywood is the most prominent of the playwrights who contributed a great deal to the popularity of the interludes. His work जिसको the 4Ps कहा जाता है वो, और उसके बाद जो है कई सारे उनके प्लेस आए थे. John the husband, Tybe his wife, and Sir John the priest are considered as the best interludes. Right? उसी को जो है बेस्ट इंटरल्यूड की कैटेगरी में इन्हीं को रखा जाता है. राइट? फिर डेफिनेशन समझिए कि इंटरल्यूड इज अ शॉर्ट एंटरटेनमेंट पुट ऑन बिटवीन द कोर्स ऑफ अ फीस्ट और द एक्ट्स ऑफ अ प्ले ड्यूरिंग द मिडिल एजेस up to the beginning of 16th century. Right? Up to the beginning of 16th century, the term was used to describe a variety of dramatic entertainments. Italian Renaissance drama had intermezzi. In France and Spain, similar diversions were called entertainments and intermezzi. Right? और इंग्लैंड में उसी को interlude कहा जाता था. तो after miracles, after mystery plays, we have modality, and from modality we have interludes, and after interludes the next step जो है that is a full length drama. And full length drama in England was started with a comedy, and the name of the comedy was the जो है Ralph Duster, and at the same time another play was performed. जो है एक और प्ले परफॉर्म हुआ था और उस प्ले का नाम था गैमर गर्टन्स नीडल. एंड देन वी कम टू द फर्स्ट ट्रेजेडी दैट वाज रिटन बाय टू राइटर्स, Thomas Norton and Thomas Sackville, and the name of the play was the tragedy of Gorboduc, Ferex or Porrex. Right?
सो दिस इज अ जर्नी, दिस वाज द स्टार्टिंग जर्नी ऑफ द ड्रामा। और फिर उसके बाद जो है एक पूरा बंच आता है राइटर्स का, और फुल लेंथ प्लेस आना शुरू हो गए हैं। एंड टिल नाउ ड्रामा was in the hand of church, drama was in the hand of liturgical people, churchmen, right, in the hand of pope. And now once secular drama starts, it came into the hand of common people, it came into the hand of humanistic scholars, and they extended it। और उसको कितना एक्सटेंड किया कि शेक्सपियर जैसा जीनियस आता है, और फॉर राइटर्स लाइक क्रिस्टोफर मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर, sky was not the limit, right? They went beyond the sky to जो है for the extension of the drama, they extended it to जो है up to the most। जितना extension हो सकता था उतना extension होता है। Now come to the university wits। Let's first talk about the university wits and their contribution to drama। During the 16th century, there were only two important universities, Oxford University and Cambridge University. Do you know when Oxford University was founded? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? किसी को पता है? Oxford University was founded in 1096. Oxford University was founded in ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कब फाउंड हुई थी? अकॉर्डिंग टू लीजेंड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी was founded in 872 when Alfred the Great happened to meet some monks there and had a scholarly debate that lasted several days. The university was given a boost in 1167 when, for political reasons, the English king ordered all students in France to return home. Right? घर पे रिटर्न करने के लिए उनको बोल दिया गया. तो in this way you could say कि the Oxford University was basically founded in 1167. Right? 1167. और एक लीजेंड ये भी है कि it was founded in 872 when King Alfred the Great happened to meet some monks there and had a scholarly debate. Right? So you could guess the antiqueness of the university कि कितने दिनों से ये चली आ रही थी. Right? Antiqueness ये थी. और आपको कहीं ऐसा भी मिल जाएगा कि अब जो है 1209 में एक और यूनिवर्सिटी फॉर्म होती है. राइट? छोड़ो, बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी के डिटेल पर नहीं जाना है, आपको अलग अलग फैक्ट्स मिल जाएंगे. राइट? और इसलिए रैंकिंग में तो पहली यूनिवर्सिटी की आप दुनिया की बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना है जो कि 1088 में फॉर्म होती है. और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है जो 1096 या 1167 में होती है. और उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सैलामैंका है नंबर 3 पर 1134 में. यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस आती है और यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज आती है. दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1209. राइट? एंड दीज टू आर द मोस्ट एंशिएंट जो है यूनिवर्सिटीज ऑफ इंग्लैंड. राइट? और वहीं पर इन्हीं दोनों यूनिवर्सिटी से
कुछ स्कॉलर्स थे, दे स्टार्टेड टू write plays, they started to write criticism, and they started to write pamphlets, and they became the predecessors of William Shakespeare and other upcoming dramatists and poets. सबके वो predecessors बनते हैं, right? The university wits is a phrase used to name a group of late 16th century English playwrights who were educated either at Oxford University or at the University of Cambridge, right? Prominent members of this group were Christopher Marlowe. Prominent members were Christopher Marlowe, and then Robert Greene, and Thomas Nash. These three were scholars from Cambridge University, Thomas Nash, and from Oxford University we have John Lilly, Thomas Lodge, Thomas Lodge, and George Peele. These are the prominent scholars of the Oxford University, right? Thomas Kidd is also sometimes included in the group, though he was not from any of the aforementioned universities, right? Thomas Kidd, sometimes he is also considered in the group of university wits, though he was not the part of either university. वो दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी के पार्ट्स नहीं थे, राइट? द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स was coined by George Sainsbury, right? The term university wits was coined by George Sainsbury. The term university wits was coined by George Sainsbury, a 19th century journalist and author. Sainsbury argues that the rising sap of dramatic creativity in the 1580s showed itself in two separate branches of national trees, और उसमें से एक है यूनिवर्सिटी विट्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी and Oxford University. The scholars of Cambridge University and scholars जो है of Oxford University, though there was no term like university wits when they were alive, right? They didn't form any company, they didn't form any committee, but when historians starts writing, जब वो लिखना शुरू करते हैं, then on the basis of stylistics, on the basis of their features, they collect the writers. All of them, जो primary feature था, they belonged either to Cambridge University or to Oxford University, and on the basis of universities, George Sainsbury divided them. George Sainsbury formed a group, and that group he described as university wits. Wits means minds. They were the intellectuals of the universities who practiced drama, who practiced poetry, and who practiced other genre of literature, right? Let's talk about the first one, and the first one is Christopher Marlowe, and undoubtedly the most intelligent and most dramatic character भी है उसका, जो है यूनिवर्सिटी विट्स के सारे कैरेक्टर्स में. Christopher Marlowe was contemporary to William Shakespeare, and he was the student of Cambridge University, and he was the first dramatist
in whose drama we see Renaissance as a whole as have flourished. हमको ये दिखता है कि रेनेसांस पूरी तरीके से क्रिस्टोफर मार्लो के प्ले में ही फ्लरिश करना शुरू होता है. ही इन्वेंट्स कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स इन्वेंट्स करते हैं, और कैसे कैरेक्टर्स कि ईच कैरेक्टर depicts a different quality of Renaissance. For example, if we talk about his character Tamburlaine, Tamburlaine is the man who is hungry of power. He wants to conquer the world, and this is the human approach. After the long battle between humanity and divinity, now humanism overcomes, और फिर ये होता है कि कैरेक्टर्स लाइक टैम्बरलेन was created. क्रिएट किए जाते हैं ऐसे कैरेक्टर्स कि टैम्बरलेन wants the whole kingdom, whole universe to win. Dr. Faustus wants to have the knowledge of entire world. Jew of Malta wants to have the wealth of entire world. Means all of the characters created by Christopher Marlowe depicts one quality of Renaissance, और वो टॉप क्वालिटी की बात होती है. राइट, वो क्रिस्टोफर मार्लो अपने प्लेस में पोर्ट्रे करते हैं. राइट, क्रिस्टोफर मार्लो was born in the same year when Shakespeare was born in 1564, and Christopher Marlowe was murdered in 1593 when he was just 29 years old. Right, he was English playwright, he was poet, he was translator, and Marlowe is among the most famous of Elizabethan playwrights. Based upon many imitations of his play Tamburlaine, modern scholars consider him to have been the foremost dramatist in London in the years just before his mysterious early death. Right, he was supposedly the most important, most intelligent dramatist of the time, and his name was Christopher Marlowe. Christopher Marlowe. Some scholars also believe that he greatly influenced William Shakespeare, who was baptized in the same year as Marlowe and later succeeded him as the preeminent Elizabethan dramatist. And do you know, there is a theory called anti-Stratfordian theory. Right? Anti-Stratfordian theory says that Christopher Marlowe was not murdered in 1983. Actually, anti-Stratfordian theory says that the plays that are attributed to William Shakespeare were not written by him. There was no character like William Shakespeare. Right? He didn't write the play. Then who wrote the plays that are attributed to William Shakespeare? तो जो फर्स्ट नेम आता है वो क्रिस्टोफर मार्लो का आता है. इट इज सेड दैट कि इन 1593 वैसे मार्लो की डेथ हो गई थी, मिस्टीरियस डेथ था, बट द एंटी स्ट्रैटफोर्डियन थियरिस्ट्स क्लेम कि in 1593 Christopher Marlowe was not murdered. Instead, Christopher Marlowe changed his name and his guise. Right, name और guise दोनों चेंज कर लिया और मार्लो ही विलियम शेक्सपियर बन गया था. दिस इज द फर्स्ट क्लेम ऑफ एंटी स्ट्रैटफोर्डियन थियरिस्ट. सेकेंड क्लेम एंटी स्ट्रैटफोर्डियन का ये है कि दूसरा जो राइटर, द प्लेस दैट आर अट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर were not written by Shakespeare, but they were written by Francis Bacon, who was also contemporary to William Shakespeare. Right? इनको attribute कर देते हैं. And you know who Francis Bacon was? He is called the father of English essays. And some of the anti-Stratfordians claimed that the plays that are attributed to Shakespeare were neither written by Christopher Marlowe, not by Shakespeare, not by Francis Bacon, but by the Earl of Oxford, Edward de la Mare. Right?
इसने जो है प्लेस लिखे थे, ये एंटी स्ट्रैटफोर्डियन थियरिस्ट जो है ये क्लेम करते हैं। बट वी हैव टू फर्स्ट डिस्कस द प्लेस रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो राइट जो है सॉरी he wrote extensively and he was a poet as well as a dramatist. In poetry he wrote a poem called Hero and Leander. Hero and Leander. Hero is the name of the heroine and Leander is the name of the hero, right? Hero and Leander, right? Christopher Marlowe wrote this poem, but when he died this poem was incomplete, and after the death of Christopher Marlowe it was completed by George Chapman, right? Hero and Leander was completed by George Chapman. George Chapman was another Elizabethan dramatist. He completed the poem, and apart from George Chapman there was also a minor poet named Henry Peto. He also gave an alternative ending to the poem. P-E-T-O-W-E, right? Henry Peto has also gave an alternative completion to the poem. The poem was first published 5 years after the death of Christopher Marlowe. Right, this is the only poem that is credited to Christopher Marlowe, Hero and Leander. Right, the story was based on Greek myth. And then drama starts. The first drama written by him, Tamburlaine the Great. Tamburlaine the Great. The play was based on the Asian barbarian ruler आप कहेंगे तैमूर लंग जिसको आप कहते हो, and Tamburlaine the Great was based on the Asian ruler Tamur Lung, and it was written in 2 parts. 2 पार्ट में इसको लिखा गया था, Tamburlaine the Great in 2 parts. Right? Tamburlaine the Great was written in 2 parts, and when was it written? It was written in 1587 or 1588. 1587 or 1588. Right? The play is a milestone in Elizabethan public drama. It marks a turning away from the clumsy language and loose plotting of the early Tudor dramatists, and a new interest in fresh and vivid language, memorable action and intellectual complexity. Right? जहां तक प्लॉट की बात है कि जो तिमूर था, तिमूर वॉज तुर्किक मंगोलियन एंसेस्ट्री का था. राइट? तिमूर ओरिजिनली जो है तुर्किक डायनेस्टी का है, तुर्किक मंगोलियन डायनेस्टी का है. एंड फॉर द सेक ऑफ फॉर हिज ड्रामेटिक पर्पसेस जो है क्रिस्टोफर मार्लो ने टैम्बरलिन द ग्रेट की लिनेज चेंज करके उसको सीथियन सेफर्ड बता दिया है. राइट? सीथियन सेफर्ड उसको डिस्क्राइब कर दिया है. राइट? Instead of presenting Tamurlang as the Turkic dynasty, Turkic Mongolian dynasty, उसको सीथियन शेफर्ड बताया है for the dramatic purposes. And Tamburlaine the Great, the play was written in blank verse. The play was written in blank verse, and Christopher Marlowe was the first who used blank verse powerfully. And because of his power given to blank verse, his blank verse lines are described as mighty lines.
His blank verse lines are described as mighty lines by critic. राइट, उसको mighty lines describe किया गया है, उनके लाइंस को, उनके ब्लैंक वर्स की लाइन को जो उन्होंने अपने प्ले में यूज किया है क्रिस्टोफर मार्लो ने. राइट, और अपार्ट फ्रॉम Tamlin the Great, he also wrote Dr. Faustus, Edward II, Dido, the Queen of Carthage, and Jew of Malta. These are his other plays. And in the next class, I will talk about the plays written by Christopher Marlowe. Thank you so much for today's class. Next class, next time per with Christopher Marlowe, the entire summary and sketches of Christopher Marlowe on the basis of the play, right, on the basis of the plays even, right. Thank you so much, all the best, good luck.